Hi, good evening everyone. This is Shefali Singla, and in this session we are going to discuss the concept of 01 knapsack. So today we are going to start with the concepts of dynamic programming. Before this we were covering the concepts and the applications of greedy technique. So as of now from algorithms we have covered the applications of divide and conquer, greedy technique, and now we'll be starting with dynamic programming. So if you guys have any doubt, you can ask. आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डाउट बिकॉज जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो हम लोग मास्टर क्लास में डिस्कस कर लेते हैं एंड वी आर कवरिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल राइट सो ऑलराइट by the time I'm getting the doubts till then we can have the introduction to 01 knapsack. अब आप बोल रहे होगे कि मैम knapsack प्रॉब्लम एक आपने पहले भी करवाई है. Obviously we have covered one application of knapsack under greedy technique. But if you remember, that was a fractional knapsack or real knapsack. Fractional knapsack means you were able to take the object in fractions. Knapsack एक बैग है जिसकी आपको मैक्सिमम कैपेसिटी गिवन है, हर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉफिट और वेट गिवन है. बट व्हाट वी वर सपोज्ड टू डू, वी वर फाइंडिंग आउट द मैक्सिमम प्रॉफिट. मतलब ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से सेलेक्ट करने थे, फ्रैक्शंस में सेलेक्ट कर रहे थे सो दैट मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. बट नेम itself suggests that 01 knapsack means either the object will be taken completely or it will not be taken at all. 01 का मतलब क्या होता है? या तो नहीं लेने, 0 में मीन्स नॉट टेकन एट ऑल, 1 मीन्स जितना भी वेट अवेलेबल है पूरा का पूरा फ्रैक्शंस में लिया है, सो दैट इज 1. So it simply says that either take the object completely or don't take it. That means taking the object in fractions is not allowed. Those who have not covered the fractional knapsack or real knapsack, so let me tell you guys, knapsack is a bag which is has some capacity. तो maximum capacity आपको bag की given होगी. You will be given. I'm not going into much depth, just the overview. So you'll be given with the maximum capacity of the knapsack. Capacity, let me call this as M. Maximum capacity of a knapsack will be given to you, and you'll be given with some objects. Objects, let me say we have object 1, object 2, object 3, and so on. This way you will be given with n objects. Apart from that, corresponding to each and every object, you will be given with the profit and weight. Profit ये बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, if the object is taken, then how much profit it will be getting. Weight is basically giving you the idea that what is the size of the object that you are going to take. तो इससे क्या होगा, आपको ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से सेलेक्ट करने that should not exceed the maximum capacity and it should return the maximum profit, right? So is to get goal is to get maximum profit. We need to maximize the profit. Very good evening, Kanchan. Okay, so corresponding to object 1, profit is P1, P2, P3, and so on up to Pn. Weight is W1, W2, W3, and so on up to Wn. तो प्रॉब्लम क्या है, जब सब कुछ गिवन है तो ये कैपेसिटी कहाँ पे काम आ रही है और क्यों ले रहे हैं? Because here the problem is the sum of the weight of all the objects is greater than the maximum capacity. This means that we cannot take all the objects. जितने भी ऑब्जेक्ट्स गिवन है सबका वेट का सम मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा है, तो इसका मतलब सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो सकते. सो वी नीड टू select few objects from a given set of objects. Problem is sum of the weight of all the objects where I starts from 1 first object से लेकर nth object तक
जितना भी sum है, this is greater than the maximum capacity of the knapsack. This is the biggest problem. ये clear हुआ? अब 01 knapsack एज अ एप्लीकेशन ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग, ऑलरेडी मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है. ग्रीडी टेक्निक और डायनामिक प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या होता है? ग्रीडी लुक्स एट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, एट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फ्रॉम द अवेलेबल सेट. उस टाइम पे जो सिचुएशन है, जो सॉल्यूशंस अवेलेबल है, जो डेटा अवेलेबल है, सिर्फ उनमें से बेस्ट को चूज करता है एंड इट विल रिटर्न द सॉल्यूशन. Whereas in case of dynamic programming, ये एंड तक, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस बन सकते हैं, ये सबको फाइंड आउट करता है, सबका सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है, एंड एट द एंड इट इज रिटर्निंग द रिजल्ट. ओके, इट्स जस्ट लाइक डिग्री चल रही है आपकी, बीटेक की डिग्री चल रही है, जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप किया, बहुत अच्छा इंप्रेशन आ गया टीचर्स पे भी, बैचमेट्स पे भी, भाई ही और शी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही और शी इज गोइंग टू टॉप द डिग्री. बट क्या हमेशा ऐसा होता है? मतलब आई डिडंट ऑब्जर्व कि हमेशा जो फर्स्ट इंस्टेंस पे डिसीजन लिया जाता है वो हमेशा सही हो, ऐसा जरूरी नहीं होता. बहुत बार होता है कि डिग्री एंड होते होते जो आपने सोचा भी नहीं होता कि हु विल बी द टॉपर, ही और शी इज द टॉपर, राइट? सो दैट इज द डायनामिक अप्रोच कि एंड तक देखते हैं, एनीथिंग कैन हैपन. यूजुअली आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है, तब भी पीपल आर लाइक, सम पीपल आर लाइक, ओके दिस टीम इज गोइंग टू विन द मैच, बट देयर आर फ्यू स्मार्ट पीपल जो ये बोलते हैं कि नहीं, लास्ट बॉल तक कुछ भी हो सकता है, वी कैन नॉट से एनीथिंग. So that is the dynamic approach. Those who are saying we cannot say anything, end तक कुछ भी हो सकता है, situation can change, so that is dynamic approach, right? Similarly here, dynamic approach means we have to find out all the possible solutions. अगर 01 knapsack की बात करते हैं, we will identify कि अगर किसी object का weight is less than the maximum capacity, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं. बट वहां पे भी दो केसेस बनेंगे कि ऑब्जेक्ट को लेकर, ऑब्जेक्ट को कंसिडर करके मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट को लीव करके. Okay, so this is the whole idea behind the 01 knapsack. Let's understand this with the help of the example. But before that, please guys try to understand. I'll be sharing these PDF. I'll be sharing these slides with you guys in the PDF format in the Telegram group. So don't focus on writing the things. Just focus on understanding the concept. Okay. All right. So according to the given problem scenario, I have taken a very small problem here. There are three objects and the maximum capacity of knapsack is given as 5. This means that आप maximum कितने weight ले सकते हो? 5. But here the total, if you take the sum of the weight of all the objects, 3 objects are given. So this is 3 plus 2 plus 1, that is 6. This means that all the objects cannot be taken, right? So when will be getting the maximum profit? Maximum profit कब होगा? Is it by taking, if you look at the weights, 5 plus 3 is 2. If I'm going to take object 1 and object 2, this is going to give you the profit of 5 plus 3. We can take these two objects, right? Because the maximum capacity is 5, 3 plus 2 is 5. We can take this object, so it is returning the profit as 8. And here the capacity becomes 0. Whereas if I take object 1 plus object 3, can we take these two objects? Yes. So here the capacity was 5. जैसे ही आपने object लिया, capacity becomes 2, और जैसे ही object 3 लिया, capacity becomes 1. In this case, we are getting a profit of 5 plus 4, that is equal to 9. Other possibility is you can take object 2 and object 3. In this case, the capacity is 5 minus 2, that comes out to be 3, minus 1 comes out to be 2. Still the remaining capacity is 2. We cannot take object 1 along with object 2 and 3. So यहाँ पे profit कितना हो रहा है? It is 3 plus 4, 7. If we look at the optimal solution, this is the optimal solution. This is the best
solution because it's returning the highest profit. बट अगर यहाँ पे कैपेसिटी देखोगे, हमने वेट पे फोकस नहीं किया, स्टिल द knapsack इज हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 1, बट इट्स रिटर्निंग द मैक्सिमम प्रॉफिट. जबकि केस 1 में कैपेसिटी पूरी हो गई, जितना मैक्सिमम वेट कैरी कर सकते थे, कंप्लीट, it's completely full, but still it is returning the lesser profit. So this means that we have to decide which object to take and which object not to take. In this case, this is object 1, object 2, object 3. So taking object 1 and 2 is not giving you the maximum profit. In this case, I have taken object 1 and object 3. Object 2 is not taken. Okay. So dynamic means हमें जितने भी possible solutions है, हमें सबको find out करना है and then we'll be opting for the best one. इसके अलावा और कोई possibility? There is no other possibility, right? Idea clear हुआ? Is this idea clear to everyone? Guys, hurry up. Is this idea clear? So basically what we are doing is we'll start the algorithm from the last object because हमें मालूम है कि terminate कहाँ पे करना है, 1 के बाद जैसे ही object खत्म हो जाएंगे will terminate. अगर हम object 1 से start करेंगे, यहाँ पे आपको कोई arrangement नहीं करना, no or sorting in ascending or descending order because anyhow we have to consider all the possible cases, तो sorting का कोई फायदा नहीं है. तो what we are doing is I'm making a call to a function 01 knapsack. ये क्या कर रहे हैं, किसके ऊपर कॉल कर रहे हैं? Right now we have 3 objects. I am focusing on the object 1, 01 knapsack. Right now the maximum capacity is 5 and I am considering object 3. This is the maximum capacity and this is the object that we are considering. Again I am repeating this point, we are not going to start from 1 because लूप को क्योंकि रिकर्सिव कॉल है, सेम थिंग अप्लाई करेंगे सब प्रॉब्लम के ऊपर, सो डेफिनेटली रिकर्शन आएगा. तो हमें टर्मिनेशन कंडीशन प्रोवाइड करनी है. टर्मिनेशन कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, जब सारे ऑब्जेक्ट्स खत्म हो गए तब फंक्शंस को कॉल करना बंद कर दो. सो दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट ऑब्जेक्ट. नाउ इफ यू सी द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट 3, दिस इज लेस देन द कैपेसिटी. अगर लेस देन है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं. But we do not know whether by taking the object or by rejecting the object will be getting the maximum profit. So here we'll be getting two cases, 01 knapsack. In the first case, I'm saying that we are not taking the object 3. We are not considering the object 3. जब आपने object 3 को लिया ही नहीं तो weight same रहेगा. And now the pointer is going to move to the next object to be considered, that is object 2. Since the object is not taken, so no profit will be given. यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ले सकते थे but we have rejected the object. Second scenario is object is taken. If the object 3 is taken, the weight of object 3 is 1. अगर object 3 को ले लिया तो obviously remaining capacity will be 4 and next we have to consider the object 2. अब क्योंकि object 3 को select किया है तो definitely profit will be given, so it is returning the profit as well. अब आपके पास यहाँ पे दो और फंक्शन कॉल्स आई. विल बी इलैबोरेटिंग दीज फंक्शन कॉल 01 knapsack 5,2. That means right now the capacity of the knapsack is 5 and the object that we are going to consider is object 2. Capacity is greater than the weight of the object. So यहाँ पे भी आपके पास दो scenarios बनेंगे. We can take the object or we can reject the object. 01 knapsack, if the object is rejected, capacity won't change and will be considering the next object. दूसरे केस में हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ले लिया because weight is less than the capacity. So if the object is taken, then its remaining weight will be 5 minus 2 and next object has to be considered, इस object का profit मिल जाएगा. Are you getting what I am doing? Madam, please suggest me NIC free batch where I can get free syllabus for NIC scientific assistant course.
आई गेस इसी चैनल पे हिमांशु सर इज टेकिंग केयर ऑफ द एनआईसी. रेस्ट यू कैन फॉलो दीज सेशंस, क्योंकि एनआईसी के सिलेबस में जो कॉन्सेप्ट्स आने हैं वो मैं पहले वही कॉन्सेप्ट्स कवर कर रही हूँ जो एनआईसी और इसरो में भी आने. तो इस चैनल पे भी ठाकुर आपको मिल जाएंगे. ओके. तो इस तरीके से what we have to do is we have to solve all the sub problems. Recursive calls आ रही है, इनको solve करते जाओ. Now we are getting 0 1 knapsack 5,1. Capacity is 5. We are considering the object 1. Object 1 का जो weight है that is 3. That is less than the weight. What we are doing is if the weight is less than the maximum capacity, तो दो possibilities हैं. आप object ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते. If the object is rejected, will not be getting any profit. If the object is selected, then will be getting the profit. Weight of the object is 3. 5 minus 3 is 2. And consider the next object. If the object is selected, then the profit will be assigned. Since we want the maximum profit, we want to earn the maximum profit, तो जो भी आपके पास possible solutions आ रहे, उनमें से हम maximum value ले लेंगे. Are you getting this? क्योंकि इसके basis पे we are going to write the recurrence relation as well. Directly recurrence relation based question आ सकता है. Okay. So if you see, let's quickly finish it off. This is over. अब क्योंकि zeroth object आ गया, इसका मतलब सारे objects खत्म हो गए. So this will be behaving as a termination condition. So 0 1 knapsack. Let me write here. 0 1 knapsack 5,0 will be returning 0. Why is it returning 0? क्योंकि object खत्म हो गए, किसका किसका profit मिलेगा, किसी का नहीं. So if termination condition क्या होगी, अगर maximum capacity 0 हो जाती है या फिर objects खत्म हो जाते, then in that case it will be returning the profit as 0. Goal is to return the maximum profit. अगर object ही नहीं है या फिर space ही नहीं है तो obviously profit will be 0. So I am returning here 0. So we are getting here the termination condition. This is going to return 0. This function will return 0. 0 plus 0 is 0. 0 plus 5 is 5. So this function call is getting the maximum value as 5. 5. 5 plus 0 is 5. Check here. 3, 1. 3 is the capacity of the knapsack and we have to consider the object 1. So what will be the profit return? So third object ko consider karke, obviously if the capacity is full, this is going to return 5. 5 plus 3 is 8. Here we'll be getting the value, overall value as 8. So 0 1 knapsack, here we are getting the value 8. 8 plus 0 is 8. Need to expand this function call and we'll get the solution. 0 1 knapsack 4, 2. That means right now the capacity of knapsack is 4 and we are considering the object 2. Capacity is greater than the weight of the object. तो इसका मतलब हम object को consider कर सकते हैं और reject भी कर सकते हैं. So if the object is rejected, capacity remains the same. आपने object लिया ही नहीं, capacity remains the same, and then we are considering the next object. Because the object is not taken, so profit will not be assigned. Next, 0 1 knapsack, if the object is taken, capacity will be updated to 2 because 4 minus 2 is 2. Consider the next object. Profit corresponding to object 2 is 3, so profit is granted. We need to take the maximum value. Capacity is 4 and there is only one object, so maximum profit will be earned by considering this object, so it comes out to be 5. Object 1 lena hai 0 1 knapsack 2, 1. If you see here, object 1 ka jo weight hai, that is 3, but the capacity is 2. This means that this object cannot be taken. तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही कॉल आएगी क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है. This object cannot be taken at all. So 0.
Now this is a termination condition, so this function call is returning 0, 3. Maximum value is 5. So here 4 comma 2 is getting the value 5. 5 plus 4 is 9. If we look at the maximum value, 8 or 9 में से maximum is what? 9. That means overall solution, optimal solution for this problem is 9. हमने manually इसे calculate किया था. कैसे आया है? 9 कैसे आया? If you look at this problem, इसमें maximum value आई 9. कब? जब आपने इस object को consider किया था. That means object 3 should be taken in order to earn the maximum profit. After that, it's making a call to 4 comma 2. 4 comma 2 में it's returning the maximum profit when object 2 is not taken. Maximum profit कब आया? Object 3 लिया है. Object 2 is not taken. This is not taken. And after that, object 1 is taken. Okay? क्योंकि प्रॉब्लम बहुत छोटी थी, so I solved it without a recurrence relation and with recurrence relation. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली इफ इट्स अ लेंथी प्रॉब्लम देन यू हैव टू फॉलो द रेफरेंस रिलेशन, बट डायनामिक प्रोग्रामिंग से कभी भी लेंथी क्वेश्चन नहीं आते बिकॉज लॉट मेनी फंक्शन कॉल्स आर इन्वॉल्व इन द डायनामिक सॉल्यूशंस. तो क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली रेफरेंस रिलेशन बेस्ड. आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, फंक्शन कॉल्स कैसे आ रही हैं वो पता होनी चाहिए, नथिंग मोर देन दैट. गाइस, इज दिस क्लियर? हैव यू गॉट एन आइडिया? Yes. So anyhow, I'll be sharing this PDF in the Telegram group, that is Shefali ma'am Testbook. Link of this group is given in the description box. You guys can join it. And इस ग्रुप के बेनिफिट्स ये हैं, एक तो आपको डेली की डेली PDF मिल जाती हैं, जितने भी YouTube सेशंस होते हैं. कंटेंट नोट डाउन करने के पीछे भागने की जरूरत नहीं है. यू कैन सिंपली फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स एंड यू विल गेट ऑल द PDFs. यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड the queries in the telegram group. आप directly भी मेरे साथ interact कर सकते हो and quizzes and polls में भी आप participate कर सकते हो. Again, I'm repeating this point. Either you can search for Shefali ma'am textbook or you can directly join the group from the link which is given in the description of this video. Okay, one more problem is there. Can you guys tell me that what will be the maximum profit or the optimal solution for this problem? एक और प्रॉब्लम कहते हैं, then we'll be writing the recurrence relation and then we'll look at how to find out the time complexity. Do you want to try this question? Again, here we are given with three objects. We are given with three objects and the maximum capacity. This is the maximum capacity. Maximum capacity of the knapsack, and this is representing the number of objects. Number of objects and the maximum capacity is given to you. We are supposed to find out the maximum profit. कैसे फाइंड करेंगे? अभी हमने डिस्कस किया, आई एम मेकिंग अ रिकर्सिव कॉल 01 knapsack. Idea here is if the maximum capacity is greater than the weight of any particular object. अगर आप nth object को consider कर रहे हो, capacity is more than the weight. अगर capacity ज़्यादा है किसी particular object के weight से, तो हमारे पास दो options है. We will check by rejecting the object will be getting the maximum profit because we do not know about the profits of the other objects. क्योंकि अगर आप object 3 से start कर रहे हो, आपको नहीं पता कि what data is given for object 2 and object 1. So that's why we may get the profit by rejecting the nth object, rejecting the nth object, or by taking the nth object.
दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर इक्वल टू है तो भी हम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। इफ द कैपेसिटी इज लेस देन द वेट ऑफ nth ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है, कैपेसिटी कम है, तो ऑब्जेक्ट ले ही नहीं सकते, क्योंकि फ्रैक्शंस में ऑब्जेक्ट लेना इज नॉट पॉसिबल। कैनॉट टेक द ऑब्जेक्ट एट ऑल, दैट्स इट. And this is the concept that we are applying here. So, can you tell me that what is the maximum profit that you are getting for this problem? Anyone? Maximum profit for this problem. I don't want to give you the reconciliation directly, so that's why I'll be solving this using the recursive call, because directly आप find कर सकते हो. Maximum capacity is 15, so 10 plus 6 is not possible, 6 plus 7 is not possible, 6 plus 7 is possible, 10 के साथ आप दोनों में से कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते. पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं, या तो सिर्फ आप ऑब्जेक्ट 1 लोगे, या फिर ऑब्जेक्ट 2, only object 3 can be taken, object 2 and 3 can be taken, there is no other possibility. ये हमने manually find कर लिए, problem छोटी थी तो हम इसको observe कर सकते हैं. So if this is the case, profit earned is 50, if this is the case, profit earned is 29, if this is the case, profit earned is 33. And if both these objects are taken, then the profit is 2 and 6. It's 62, which is the optimal solution. We have got it. हमें reconciliation की जरूरत नहीं है, है ना? But problem जो आएगी उसमें maximum profit की जगह reconciliation पे focus ज्यादा होगा. So let's solve it using the reconciliation. Capacity is 15, and right now we are considering the object number 3. Object 3 का जो weight है, that is less than the maximum capacity of a knapsack. कैपेसिटी से लेस है वेट का ऑब्जेक्ट, तो दो ऑप्शंस आएंगे, रिजेक्ट द ऑब्जेक्ट और टेक द ऑब्जेक्ट. If I'm going to reject the object, though capacity remains the same, we'll be considering the next object. We are coming like this. Consider the next object. जब object लिया ही नहीं तो obviously बात है no profit will be assigned. And if the object is accepted, if the object is taken, then its weight will be considered. 15 minus 7 is 8. Now consider the next object. If the object is taken, तो corresponding object का profit मिलेगा. And we have to get the maximum value, maximum profit out of it. अब आपके पास दो नई फंक्शन कॉल्स आ गई. अब इन दोनों फंक्शन कॉल्स को सॉल्व करते हैं. 15, 2. That means right now we are considering the object 2. Focus on the weight of the object, that is 6. 6 is less than the capacity of a knapsack, so this object can be taken or it can be rejected. Maximum of दो cases बनेंगे. 0, 1 knapsack. If the object 2 is rejected, then the capacity remains the same. Moving on to object 1. No profit will be assigned. Other possibility is 0, 1 knapsack, object is taken. So 15 minus 6 is 9. One more object is there in the problem. Profit assigned will be 29. We're getting the problem 0, 1 knapsack, 15, 1. अब क्या होगा? Object 1, capacity is 15, weight of the object is 10. Weight of the object is less, so again here we'll be getting 2. Optimal solution will be 62. We have already taken that. Object 1 and 3 cannot be taken. Alright, so capacity is 15. Object 1 into the consideration. तो ले भी सकते ऑब्जेक्ट को, नहीं भी ले सकते, because the weight of the object is less than the capacity. So if we are not taking the object, capacity remains 15, 0 and no profit is assigned. If the object is taken, 15 minus weight of the object, that is 15 minus 10 is 5. No object is pending. Profit is given as 50. जब 0 हो गया, that is behaving as a termination condition. कोई object बचा ही नहीं, so this will be returning 0. 0 plus 0 is 0. This is 0. 0 plus 50 is 50. So this function call is returning the maximum value as 50.
50 is returned here. 50 plus 0 is 50. If I'll be taking the next call, this one, 01 knapsack 9, 1. That means object 1 consider कर रहे हैं, weight is 10 but capacity is 9. Weight of the object is more than the capacity. तो object cannot be taken, इसमें कोई choice ही नहीं है, so it will be returning 01 knapsack 9, 0 and object not taken. Return the profits, this is 0 and 0, so it is ultimately returning 0. 0 plus 29 is 29. So here 50 value will be returned. Maximum of 50 and 29 is 50, so 50 value is returned 50. 50 plus 0 is 50. एक solution आ रहा है which is returning the profit as 50. But there is another call as well, 8, 2. Let's expand it. 01 knapsack 8, 2. 8, 2 बोल रहा है कि इस टाइम पे knapsack की जो capacity है that is 8 and we are considering object 2. Weight of object 2 is 6. Capacity से कम है तो बैग में आ सकता है ये object. That means will be considering here two possible cases कि इस object को लेकर maximum profit होगा या reject करके. 01 knapsack अगर reject किए तो capacity remains the same. Will be considering the next object. If the object is taken, then update the capacity. 8 minus 6 is 2. Consider the next object. Profit is 29. Right? Elaborate this function called 01 knapsack 8, 1. That means object 1 को consider करना है. Object 1 का weight 10 है but capacity 8 है तो object को नहीं ले सकते. This object will be rejected, so it will be returning 01 knapsack 8, 0 and no profit will be assigned. That will be returning 0. Similarly 01 knapsack 2, 1. Object 1 consider करना है, capacity 2 की है. Can we take this object? No, because weight of the object is more, so it will be returning 01 knapsack 10, 2, 0. Termination condition आ गई, so it will be returning the value 0 plus 0 is 0, so this function call is getting the value as 0. This function call is getting the value as 0. आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते थे कैपेसिटी 8 है, ऑब्जेक्ट 1 लेना है तो ऑब्जेक्ट ले ही नहीं सकते, सो दैट विल बी रिटर्निंग द वैल्यू एज 0. 0 plus 29, this is returning 29, so 8, 2 के लिए कॉल आई 29. So this function call is returning the value as 29. 29 plus 33 is 62. Out of 50 and 62, obviously 62 is the maximum value, so 62 is the optimal solution. कौन सा ऑब्जेक्ट लेके आया? ऑब्जेक्ट 3 को कंसिडर किया है. Object 3 is taken. We are getting the maximum profit when object 3 is taken. And after that 8, 2 वाली कॉल पे जाओ. 8, 2 में object 2 is taken and object 1 is not taken. So by taking object 2 and 3, we are getting the maximum profit. I hope that the functionality, the working of 01 knapsack is clear to everyone. Okay, so agar aap comfortable ho, we can write the recurrence relation for 01 knapsack. Can somebody tell me that what should be the recurrence relation? Recurrence relation के लिए हमें एक function call चाहिए. Let me take this as 01 knapsack. I'm assuming that the maximum capacity of a knapsack is M and number of objects are N. Here, I'm assuming that M is representing the maximum capacity of a knapsack. एग्जाम में ये इतना बड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इतना बड़ा सा आपको डिटेल में सारी कॉल्स को करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व 8, 2 तो इसमें सिर्फ आप ऑब्जेक्ट 2 ले सकते हो. स्मार्ट अप्रोच फॉलो करनी है. पहली चीज, मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो आते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग के, दोज आर रेफरेंस रिलेशन बेस्ड. रेफरेंस रिलेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि मैम आपने क्यों सॉल्व किए, क्योंकि
जब आप क्वेश्चन की वर्किंग देखते हो तो इट्स इजी फॉर यू गाइस टू राइट अ रेक्टेंसुलेशन, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, आई हैव रिटन ईच एंड एवरी फंक्शन कॉल, मैंने हर एक कॉल को इलेबोरेट किया है बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट फॉर यू गाइस, राइट। बट जब आप खुद के लिए सॉल्व करते हो तो आपको हर स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। आई शुड हैव स्किप दिस स्टेप। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही होती तो डेफिनेटली मैं इस स्टेप को स्किप करती, क्योंकि कैपेसिटी 8 है, ऑब्जेक्ट 1 कंसिडर करना है, तो ऑब्जेक्ट 1 ले ही नहीं सकते, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू 0 रिटर्न करती। कैपेसिटी इज 2, ऑब्जेक्ट 1 को कंसिडर करना है, आई कुड हैव डायरेक्टली रिटर्न द वैल्यू 0, तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये फंक्शन कॉल्स आपको इलेबोरेट नहीं करनी थी। तो आप प्रॉब्लम जो भी आपके पास फंक्शन कॉल आ रही है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी कॉल को इलेबोरेट करना चाहिए टू गेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, एनी अदर क्वेरी? नाउ इफ यू आर कंफर्टेबल विद द वर्किंग, try to return the reconciliation maximum capacity of knapsack जो उस टाइम पे अवेलेबल है, and n is representing the number of object, कौन सा ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हो। जब भी हम reconciliation लिखते हैं, we have to write the recursive statement as well as the termination condition. Termination condition will be अगर आपके पास सारे ऑब्जेक्ट्स खत्म हो गए या कैपेसिटी खत्म होगी, if m is equal to 0 यानी कि कैपेसिटी नहीं बची, और n is equal to 0 ऑब्जेक्ट सारे खत्म हो गए, कैपेसिटी खत्म होगी या ऑब्जेक्ट खत्म हो गए, in that case we'll be getting the profit as 0. This statement is behaving as a termination condition for 01 knapsack. This is for termination condition. Apart from this, we are supposed to write the recurrence relation, recursive statement. What will be the recursive statement? अब हमने ये बोले दो केसेस बनेंगे, if the maximum capacity of the knapsack, if the capacity of the knapsack is less than weight of the object. कैपेसिटी कम है, ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है वी कैन नॉट टेक द ऑब्जेक्ट, कैनॉट टेक द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते तो कैपेसिटी रिमेन्स द सेम, कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ विल बी कंसिडरिंग द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट लिया ही नहीं, ऑब्जेक्ट इज रिजेक्टेड, तो ऑब्वियसली बात है देयर विल बी नो प्रॉफिट एलोकेटेड। प्लस 0 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो डजंट मैटर, बिकॉज आप किसी भी नंबर में जब 0 ऐड करते हो रिजल्ट रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट वन, other cases, if the capacity of a knapsack is greater than or equal to weight of the nth object, तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे। हम चेक करेंगे कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कंसिडर करके मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है या रिजेक्ट करके। सो 01 knapsack, इफ वी आर रिजेक्टिंग द ऑब्जेक्ट तो कैपेसिटी रिमेन्स द सेम, रिजेक्टेड द ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन, अगर ऑब्जेक्ट लिया है तो कैपेसिटी विल बी अपडेटेड, मैक्सिमम कैपेसिटी में जो भी nth ऑब्जेक्ट का वेट होगा that will get subtracted, yahi ke this is the first parameter. Second parameter is we need to consider the next object. Since the object is taken, so profit will be assigned plus profit of that nth object, and out of this we need to take the maximum value because the goal is to earn the maximum profit. So this is the recurrence relation. तो दो केसेस है, अगर आपके पास कैपेसिटी ज्यादा है nth ऑब्जेक्ट से, तो दो केसेस है, either reject the object or accept the object. This is about the recurrence relation of 01 knapsack. Is this clear?
Guys, is it clear? अब जब आपके पास recurrence relation है तो obviously we can write a recursive program, but recursive program में होगा क्या? There will be lot many function calls which will get repeated. What I'm saying is, अगर आपके पास function call आती है for example 01 knapsack 15,5, function calls क्या आ सकती हैं यहाँ पे? It can be any function call 01 knapsack 15,4. आपने ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर दिया. We are taking the object 01 knapsack. हो सकता है fifth object का weight 1 हो. So it will be 14,4. We can elaborate this. 01 knapsack. Object is rejected 15,3. हो सकता है fourth object का weight 1 हो 14,3. We might be rejecting this object 01 knapsack. Fourth object is rejected, so it is returning 14,3. Consider the next object. Other one is 01 knapsack. If the weight is 1, I'm assuming that weight of all the objects is 1, so we'll be getting here 13,3. We'll elaborate it further. So like this, we will be getting the function calls. Worst case में क्या होगा? This tree will be full. We'll be getting here the function call like 15,2. Here I'm getting 14,3 or 14,2. Considering the next object, 01 knapsack. Object is not taken 14,2. 01 knapsack 13,2. Like this. You can elaborate it. If you see here, these two function calls are the same. 01 knapsack 14,2. 01 knapsack 13,2. 01 knapsack 13,2. 01 knapsack 12,2. Like this, we'll be elaborating this tree. This is nothing but this is a recursive tree. Okay. अब वर्स्ट केस में ये भी हो सकता है कि आपके पास सारी फंक्शन कॉल्स डिफरेंट आए और अदर पॉसिबिलिटी इज आपके पास रिपीटेड फंक्शन कॉल्स आ सकते हैं. जब हम रिकर्शन के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वी मे गेट द रिपीटेड फंक्शन कॉल्स और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स. We may come across overlapping subproblems. So what will happen in this case? Overlapping subproblems means if you are using a recursive call, you'll be solving the same function call again and again. So in order to overcome the solution, because if that will be the case, in that case, it is having 2 raised to power n function calls where n is representing the number of objects 5, 4, 3, 2, 1. And 0. कितने levels बनेंगे इस tree में? Number of levels in a tree will be n. अगर आपके पास 100 objects है तो 100 levels will be there, and with n levels number of function calls will be approximately 2 raised to power n, क्योंकि आपके पास complete tree बन रहा है, right? So what will be and out of these function calls, majority of the problems will be the overlapping sub problems. So that is going to return the time complexity as 2 raised to power n. That is nothing but exponential time complexity, and we know that exponential time complexity is not acceptable in computer science. Exponential time complexity. So in order to overcome this problem, we have the concept of memoization dynamic programming. Memoization और dynamic programming क्या करते हैं? यहाँ पे मैंने recurrence relation use किया. That means we are solving the problem recursively. अब इसमें हम डायनामिक प्रोग्रामिंग लेके आएंगे. डायनामिक प्रोग्रामिंग सेज दैट सॉल्व द प्रॉब्लम एग्जैक्टली वंस. मतलब अगर आपके पास फंक्शन कॉल आई 15,2, तो आप 15,2 को एक ही बार सॉल्व करोगे एंड यू विल बी स्टोरिंग इट्स रिजल्ट समवेयर इन द मेमोरी. सो व्हाट विल डू हियर इज, इफ
maximum capacity is 15. तो आपके पास distinct function calls क्या आ सकते हैं? Let's assume that the original function call is 01 knapsack 15, 5. If that's the case, maximum capacity is 15 and number of objects are 5. So I'm taking here 5, 4, 3, 2, 1. 0 के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, but if you want to add here 0 तो आप लिख सकते हो. Otherwise directly you could have said अगर 0 है तो it will be returning the value 0. Okay, these will be the levels. Distinct function calls कितनी आ सकती हैं? Maximum value is 15, 15 5 आ सकता है, then 15 14 आ सकता है, capacity is reduced, and 13, 5 and so on. So these will be the maximum function calls. आपके पास एक table बन जाएगा. 1. This grid, this table is representing the distinct function calls that we can obtain. So what the memoization is doing, since none of the problem is solved, अभी तक किसी को function call नहीं आई है, तो initially all these grids, all these cells will be containing the value as nil. जैसे ही कोई भी वैल्यू, कोई भी फंक्शन कॉल आती है, सबसे पहले इट विल लुक इनटू द टेबल whether the solution is available. That means ये पहले टेबल में देख रहे हैं कि ये फंक्शन कॉल पहले भी आई है. अगर पहले आई है तो डेफिनेटली द रिजल्ट विल बी अवेलेबल इन द टेबल. इट विल रेफर टू द वैल्यू एंड डायरेक्टली यूज द वैल्यू. तो फंक्शन कॉल को दोबारा एलैबोरेट नहीं करेगा. Okay, but if the problem is not solved earlier, अगर पहले problem solve नहीं हुई, then it will solve the problem and store the result in the table for future use. अगर दोबारा future में कोई function call आती है, it will use the value and use the value for the function call. Okay, तो अगर टेबल में से देखकर वैल्यू बता रहे, that concept is known as memoization. Please focus on this word. I'm using the term memoization. There is a difference between memoization and the memorization. Memorization means the things are known. आपको values याद है, जैसी कॉल आई रिटर्न करवा दिया, but इसको values याद नहीं है. It is looking into the table whether the function call was already solved or not. If it is there तो इसको value मिल जाएगी. अगर नहीं solve हुआ है तो value nil मिलेगी, then it will solve. Okay, तो इससे क्या होगा? Will be only solving. The benefit is will be solving only distinct function calls. सारी function calls को solve नहीं करेंगे, सिर्फ जो different function calls आएंगी will be only solving that function call. So definitely it will help in saving the time. Time complexity will be reduced. So if you see here what different function calls कितनी आ सकती हैं, this is representing कितने columns बने? It is equal to the maximum capacity of the knapsack and number of rows is basically representing the number of objects. So different function calls will be number of function calls will be m into n. So time complexity comes out to be order of mn. This is the time complexity with 01 knapsack. But definitely if the value of m is too big, agar maximum capacity is too much, then definitely here we'll be getting lot many function calls. So in worst case scenario, it might be returning the exponential time complexity. Okay, I hope that the difference between the dynamic programming and solving the problem with the recursion is clear. रिकर्शन के केस में आपके पास सेम प्रॉब्लम्स रिपीट हो सकती हैं. मेमोराइजेशन में वी आर जस्ट सॉल्विंग द डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स. इज दिस क्लियर? तो जो रेफरेंस रिलेशन था, आई हैव रिटन दैट इन द फॉर्म ऑफ द टेबल, इन द फॉर्म ऑफ अ कोड. तो यहाँ पे हमने क्या बोले? फर्स्ट ऑफ ऑल 01 knapsack, दिस इज द कॉल.
we are determining the termination condition if m is equal to 0 और n is equal to 0, तो टेबल में हम वैल्यू को 0 स्टोर करवा रहे हैं. बट अभी जो मैंने टेबल बनाया है उसमें आई एम नॉट स्टोरिंग द वैल्यू इन द टेबल, आई एम नॉट क्रिएटिंग अ रो और अ कॉलम फॉर 0. तो डायरेक्टली यू कुड हैव रिटर्न्ड हियर द वैल्यू रिटर्न 0. आपको 0 यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में आई एम स्टोरिंग द वैल्यू 0 इन द टेबल और फिर टेबल से वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं. अल्टीमेटली रिटर्न तो 0 ही कर रहे हैं, तो आप सिंगल स्टेटमेंट से इसको रिटर्न 0 कर सकते थे इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग द रो और कॉलम फॉर m or n is equal to 0. This is about the termination condition. Termination condition. After that, we had two cases. पहला case था if the capacity is less than the weight of the object. This is indicating that capacity is less than weight of the object. If that is the case, we cannot take the object. अगर capacity less है तो we cannot take the object. So instead of directly returning the value, it is making a function call. हमने ये बोला था 01 knapsack. If that is the case, it is returning. अगर object नहीं ले सकते, capacity remains the same. Consider the next object. Instead of making a call to the same function, it is first of all looking into the table. Parameters क्या है? It is m and n. In the table is two-dimensional array, so two parameters are passed. M comma n minus 1 is not equal to nil. Is not equal to nil means ये problem पहले ही solve हो चुकी है, तो it is directly returning the value. यहाँ पे इसने function को call नहीं किया, recursive call नहीं आई. But अगर value nil मिलती है, that means first time ये call आ रही है, then it's making a function call to solve this function call and storing the value in the table. टेबल में क्यों स्टोर किए? जैसे यहाँ पे फंक्शन कॉल आते ही इसने चेक किया कि टेबल में वैल्यू अवेलेबल है, सो व्हेन नेक्स्ट टाइम द फंक्शन कॉल विल बी कमिंग अप, it can check into the table. For future references, it is storing the value in the table and then returning the value. Same thing, ये केस आया जब capacity is less than, and when the capacity else means capacity is greater than the weight of the object. तो यहाँ पे आपके पास दो केसेस थे, accept or reject. Accept or reject the object. If rejecting the object, the capacity remains the same, we are considering the next object. And second condition is accept the object. So we need to update the capacity m minus wn and consider the next object. अगर दोनों values nil है, मतलब दोनों function calls पहले आ चुकी हैं, then we'll be returning the value. We need both the values because we have to return the maximum of both the values. So if both the values are not equal to nil, then we are returning the maximum of these two values. इन दोनों की maximum value return कर. But if any of the value is not available, इनमें से कोई भी एक value available नहीं है, तो पहले हमें उसे solve करना पड़ेगा by making a recursive call. So इस loop से if condition से बाहर कब आएगा? या तो first condition false है या second. If the first condition is false, it is making a call to same function, parameter same है, m comma n minus 1. Solving the call and storing this value in the table. अगर second condition की वजह से बाहर आया है, then it is making a call to m minus wn and n minus 1. अगर ये nil था, then it's making a call to the function and returning the value. After that, finally, it is returning the maximum of both the values. अब क्योंकि आपने दोनों calls को solve किया, so it is returning the maximum value. So this is the concept of dynamic programming or memoization. With the help of this dynamic programming, we are just solving the different function calls only. Okay, so the whole concept is based on the recurrence relation. I hope that this recurrence relation is clear to everyone. ये recurrence relation clear है? तो exam में nobody is gonna ask for the dynamic programming code. You just need to get comfortable with the recurrence relation.
The difference between dynamic programming and reconciliation, dynamic programming में भी हम recursive कॉल से problem को solve कर रहे हैं, but the difference is reconciliation के साथ आपके पास repeated function calls आ सकती हैं. With dynamic programming we are just solving the distinct function calls. Is this clear? So this is all about 01 knapsack. I hope that it's clear to everyone that how it's working, how to write the reconciliation, how to find out the time complexity. Anyone having any doubt? So with this, we are done with the topic for the day. Let me quickly go through the website. मैंने आपको बोला था कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो टू गेट द पीडीएफ ऑफ ऑल द सेशंस. आप अपने डाउट्स और क्वेरीज पूछना चाहते हो, अगर डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हो, देन यू कैन फॉलो दिस टेलीग्राम ग्रुप शेफाली मैम टेस्ट बुक. आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन because the link is available in the description. So just go through it. Okay. So when I'm going to the description, show more. First link is for the masterclass. Masterclass में we are covering the previous year questions of the topics that we are covering on the YouTube. Second link is for the NIC Super Coaching. Those who are targeting on NIC Super Coaching, but this is the paid one. So if you want to prepare in detail, you can go for it. Okay, this is the third link. Join Gate Super Coaching Telegram. This is the link for the Telegram group. You can join this. You can follow this link to join the group. Next one is the NIC Super Coaching Gate. So in this case, when you'll click on this link, you will be taken to the Testbook website, and here you will get the options. आप यहाँ पे पहली चीज सेल देख सकते हो. Currently the sale is live. Get 70% plus 20% off plus free textbook pass. Textbook pass में जितने भी mock test है, test series, everything is included. So if you have a super coaching, then easily you can prepare for your exam, because in this super coaching you will be getting the series of recorded sessions, live sessions, notes, detailed notes, formula notes, and the test series. So every single thing is included इन द सुपर कोचिंग. तो जो 9 months का सब्सक्रिप्शन है, 1 year लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ यू आर टारगेटिंग ऑन गेट 2024, go for 9 month subscription, and this is just for 8959. Okay, and for this, obviously this is the discounted price. To get the subscription at this price, you need a coupon code. So you can see in the description, coupon code is mentioned, that is शेफाली एस. जहां पे आपको लिंक दिया है सुपर कोचिंग का, इमीडिएटली उसके नीचे कूपन कोड भी गिवन है. यू कैन यूज दिस कूपन कोड टू गेट द सब्सक्रिप्शन एट द डिस्काउंटेड प्राइस. Under the super coaching, there are, as already told you, that recorded sessions are available. So there are multiple recorded sessions available. It's up to you कि आपको कौन सा follow करना है. So we have the complete series by the Gate Forum, by Digimento, by Nimbus Learning, and Testbook itself. So this is created by me and my team. So you can have a look over the rating, and you can go through the curriculum, and you can view the full course. Under this course, 250 videos will be there in the English language, Hindi or English का combination है. And apart from that, you can go through the notes. लाइव सीरीज में आपके पास डाउट सेशन और क्विक रिवीजन सेशंस आएंगे. इन द स्टडी नोट्स वी हैव द फॉर्मूला नोट्स एंड द डिटेल नोट्स. डिटेल नोट्स में हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक डेडिकेटेड पीडीएफ होगा which contains the solved questions, examples, concept, theory, each and everything. And in formula notes, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ही पीडीएफ होगी which contains the important set of formulas and the notes. Okay, जो डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चंस में यूज हो सकते हैं. फॉर्मूला नोट्स सिर्फ रिवीजन के टाइम पे प्रेफर करने. इस टाइम पे आप डिटेल नोट्स बनाओगे या फिर डिटेल नोट्स से पढ़ोगे. ओके. Apart from this, there are other plans as well. Those who are in the second or the third year, they can go for 1 or 2 year plan. So in total, we have 4 plans: 9 month plan, 12 month plan, 24 and 36. Earlier, we used to had 1 year, 2 year and 3 year plan. ये 9 month plan अभी recently add हुआ है. This is because there are many students those who are targeting on GATE 2024. So they are like, why do we need to pay for 12 months?
जब टाइम उससे कम बचे तो there is 9 month plan as well. But if you are targeting on GATE 2025 or 26, go for 2 year or 3 year plan. 25 और 26 पे वो लोग प्लान कर रहे होंगे जो इस टाइम पे सेकेंड या थर्ड ईयर में. So you can go for it. 9 months वाला subscription is for 8399, जबकि 24 months वाला subscription आपको 15,824 में मिल रहा है. So obviously this one is beneficial. So as per your requirement, you can opt for any of the plan. To apply the coupon code, जैसे ही आप जाओगे, here you can see the button. This is for the apply coupon. So whatever coupon is there, you can just replace it with the coupon code Shefali and just apply it. Okay, तो आपके पास discounted price आएगा. और ये already जो prices show किए हुए हैं, these are the discounted prices. So this is all from my side. If you guys have any doubt or query, you can ask. Otherwise, I'll discuss the schedule of the upcoming sessions and then we'll end our discussion. Tomorrow we are going to talk about matrix chain multiplication, one of the very important concept. और जो dynamic programming से questions आए हैं gate में, majority questions have been asked from matrix chain multiplication. Okay, so this will be the agenda for tomorrow's session. And Monday to Friday, I'm taking 2 sessions per day, one on the master class and one on the YouTube. ये free वाले sessions है जो कोई भी attend कर सकते हैं. यूट्यूब और टेक्स्ट बुक मास्टर क्लास भी फ्री है. मास्टर क्लासेस टाइमिंग्स फिक्स्ड है. फॉर यूट्यूब इट्स 4 p.m. to 5 p.m. and for master class it's 8 p.m. to 8:30 p.m. In the YouTube sessions I'm covering the concepts, and in the master classes we are covering the PYQs asked from these concepts. So like we have finished with the applications of greedy technique. तो अभी इस time पे master class में हम PYQ solve कर रहे हैं from the greedy technique. So PYQs जो gate में पूछे गए हैं. And Saturday and Sunday, this Saturday and Sunday there will be no class. Otherwise Saturday and Sunday we have the PYQ session जिसमें मैं PYQs discuss करती हूँ ISRO के. And definitely the time this session is on YouTube. Time is 7 p.m. to 8 p.m. But weekend है तो timings update हो सकते हैं. Whatever will be the timings, I'll be sharing that in the Telegram group. Telegram group जो अभी मैंने आपको बताया link share किया, इसमें मैं हर session का link भी share करती हूँ, so that अगर आपको link नहीं मिले, even then you can join it. So I guess joining the Telegram में you will get lot many benefit. Notes मिल रहे हैं, links मिल रहे हैं, you can ask your doubts, and there is no subscription fee for the same. So आप समझ सकते हो कि आप उसका benefit ले सकते हो, right? All right. So this is all from my side. I guess you guys do not have any query. Exam में, okay, this query I have already taken. No doubts. So I'll see you guys at 8 p.m. In the master class जिसमें हम greedy technique के कुछ और questions discuss करेंगे. I hope concept clarity आ रही है questions करते हुए. तो hope to see you at 8 p.m. Thank you so much, guys. God bless you. Bye bye.